Okay, so today I will discuss multiplier model. So this is a purely Keynesian model, जिसमें we will find out that when a certain amount of money is invested in the economy, okay, the impact of that investment comes in a multiplied way. Okay, it means that अगर कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी में, तो उसका जो आउटकम आएगा वो मोर देन 1 रुपी होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इवन 10 भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है एमपीसी और एनपीएस के ऊपर कि कितना टाइम्स उसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैं जो अभी बताऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि इनिशियली 100 रुपीज इन्वेस्ट किया गया इकोनॉमी में, किसी ने भी इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, और उस 100 को रुपीज से एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइनिंग हो रहा है उसका। और जो एग्जांपल मैं दूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि इफ आई इन्वेस्ट 100 रुपीज इन द इकोनॉमी, then the national income will be more than 100 rupees. It will be a multiple of 100 rupees, either 200 or 300 or 400 or 500, 1000, lakh, crores, कितना भी दूर तक जा सकता है. Okay, and it completely depends on the uh, value of NPC and the value of MPS. And what is MPC and MPS? I repeat again. MPC means, because जहाँ तक मैंने देखा है कॉन्सेप्ट अभी तक तुम लोग का क्लियर नहीं हुआ MPC और MPS का. MPC, that is marginal propensity to consume. It means that if your income rises by 1 rupee, then out of that 1 rupee, how much you are gonna spend, how much you are gonna consume. That is MPC. And out of that 1 rupee, how much amount of money you gonna save, that is your MPS. Okay, so अगर हम लोग logically सोचे तो MPC plus MPS will be equal to 1 rupees, right? Because I said that if your income rises by 1 rupee, so out of that 1 rupee, if you are spending suppose 70 paise, it means you are saving 30 paise. So 70 paise plus 30 paise will always be equal to 1. So whatever is your value of MPC, and the resultant value of MPS will give you equal to 1. Okay, is it clear? Is it clear? Okay, so as I was saying that the multiplier model works, the framework is something like it works, the economy works in a multiplied way. Okay, just a second. And this model was given by Keynes. So in the previous class, the model which we studied, we have taken investment as autonomous. We have taken investment as a horizontal line as I0, and then we have drawn the AS and the AD curve, C plus I0 plus G, right? So investment was fixed in our previous model. The economy was not, depending upon the investment. It was given. It was autonomously given, and then we found out that how the equilibrium shifts either towards right or towards left with a fixed amount of investment. Okay, if C plus I plus G increases, okay, then the economy will move from this point to this point, right? So the shift of the equilibrium or the shift of the economy from this point to this point is entirely depending upon either the consumption or on the government expenditure, because your I0 is fixed, right? In the previous model, your investment was fixed. You cannot change, you cannot influence the investment. So whatever change or whatever is happening in the economy is only due to the change in either your consumption or your government expenditure. And if I consider government expenditure also to be constant, then the entire change of the economy from this point to this point will only be due to the change in the consumption pattern. Okay. Now, consumption is A plus B1, right? This is the consumption graph. Now, as I said that in our previous model, if your investment is autonomously given as a fixed line and your government expenditure is also constant, then whatever the change is coming into the economy, it is only due to the change in consumption. And we know that consumption has two components. The first component is the autonomous consumption, that is A, and the second component is the induced consumption. That is the portion of consumption which is induced by your income, right? A plus B1.
It has two components. First component is A and the second component is BY. And what is BY? B is the MPC and Y is the income. Okay. What is the essence of MPC? If your income rises by 1 rupee, then how much your consumption is going to change. And here we are writing MPC times Y. It means if your income is changing by Y amount, Y may be anything, 100, 200, 1,000, lakh, crores. If your income is changing by Y amount, then how much amount of consumption you are going to make. Okay. The first part of consumption is autonomous. It doesn't depend on income. You are going to make that amount of consumption irrespective of the amount of income you are having. And the second part of the consumption is the consumption induced by your income. If your income increases, then how much consumption you will increase. If our income increases, then we increase our consumption, right? But by how much do we increase our consumption? It completely varies from person to person. If my income rises by say 100 rupees, I may change my consumption by 50 rupees. And if the same 100 rupee income change is there for suppose Vineet Kumar Shah class 12 stream commerce, then he may change his income, his consumption by 60 rupees. It completely depends on him. If suppose Aisha's income changes by 100 rupees, then her consumption may rise by only 20 rupees. So the induced part of consumption, that is the change in consumption due to change in a certain amount of income, varies differently for different individuals depending upon the value of MPC which that particular individual is having. Okay, I may have a higher MPC or some other person may have a lower MPC. So MPC may vary, but if we consider the national income model, if we consider the entire society, then we have an average MPC. That is the MPC of the average, the average MPC of the population. Okay. So if the average MPC of the population is 0.7, suppose it is 0.7, and remember MPC cannot exceed 1. It lies from 0 to 1, and I have given the argument why it is why it lies between 0 to 1, because MPC means if your income rises by 1 rupee, then how much your consumption is going to rise. So if your income is rising by only 1 rupees, then your consumption cannot exceed 1 rupee. It should be between 0 to 1, right? So if your MPC is 0.7, if the MPC of the nation is 0.7, and if your income rises by 100 rupees, so what does it mean? It is simply unitary method which we have done in our preschools. It is like MPC means if income rises by 1 rupee, consumption changes by say 0.7 rupee. Say, okay, so that's the value of MPC. Now if I say that if income rises by 100 rupee, then what is going to be your consumption? Who can tell me? This is simple unitary method. I have written that if income rises by 1 rupee, consumption changes by 0.7 rupee. Now if income rises by 100 rupee, then how much the consumption will change? Calculate. क्या होगा आंसर इसका? यूनिटरी मेथड है, सिंपली कैलकुलेट करो. Yes, very good. 70 rupees. So Gurpreet has given the answer 70 rupees. Now he has calculated it. He has multiplied MPC, that is 0.7 with 100. So it gives 70 rupees. So this multiplication thing, that is the product of MPC into Y, the change in income multiplied by MPC, is given over here. This A plus BY. So this BY is the change in consumption which is due to the change in income. Okay? And this A is the autonomous consumption. This BY, so this induced part depends on the MPC and the national income, or sorry, your income. Okay?
So this A plus B will give us the consumption. Now here, come to this graph. In the previous model, as I said, that investment is autonomously given and government expenditure is also fixed, because we are talking about classical model. So government has no role in classical model of economics. So whatever is the reason behind the change of the equilibrium of the nation from this point to this point, that is the shift of this aggregate demand curve from a lower portion to a higher portion, is entirely depending upon the change in consumption. And the change in consumption can happen due to the change in either of these, either A or MPC. Is it clear? Is it clear to everyone? Or shall I repeat? Is it clear? Clear. Clear. Others? Aisha, Thea, Gurpreet, Vineet? Okay. So this was the previous model. Okay. जिसमें ये लिखा था कि ये दिया हुआ था कि investment is fixed. Now coming to the multiplier model, where Keynes said that investment cannot be fixed. Okay, investment has a role in economy. Economy can be changed, or the equilibrium can be changed with a change in the investment. Okay, and he argued that investment fosters economic growth. It has a multiplier effect on the overall economy. Okay, and his model was very realistic and very simple. But after a few years, his model was also challenged by some of his critics. We will come to it after 3-4 chapters. Okay, so uh, suppose you have invested, any one of you have invested, say 100 rupees in the economy. Okay, 100 rupees. That is the initial investment which is made. Okay, so delta I is equal to 100. I have not written I naught because I is not fixed over here. Okay, so delta I is equal to 100 rupees. An investment of 100 rupees is made. So if someone is investing 100 rupees, it means some portion of the society is having an income of 100 rupees, right? अगर कोई invest कर रहा है 100 रुपए, इसका मतलब equivalent to that 100 rupees, someone's income is 100 rupees, right? So in the first round, we have multiple rounds here. Okay, so I'm talking about first round. जब किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो वो किसी के लिए इनकम हुआ. ओके, तो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, समझो बहुत सारा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में 130 करोड़ पीपल, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो 100 रुपए इनकम हुआ. ओके, अब सपोज उनका एमपीसी इज 0.7. ओके, सपोज उनका एमपीसी इज 0.8 करते हैं, 0.8. तुम लोग के बुक में 0.8 से एग्जांपल दिया हुआ है. ओके, सो 100 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, वो 100 रुपए किसी के लिए इनकम हुआ, और उस ग्रुप का, उन लोगों का जो एमपीसी है वो है 0.8. Now tell me, if their income is 100 rupees and if their MPC is 0.8, then what is going to be their consumption? 80. Yes, very good. So their consumption is going to be 80 rupees. So they are going to spend that 80 rupees, right? So if their consumption is 80 rupees, because we know BY is equal to 0.8 into 100, that is 80 rupees. It means out of that 100 rupee income, they are going to spend, or they are going to consume 80 rupees. Okay, so 80 rupees is being spent by that group of people. Now वो लोग किस चीज में उसे स्पेंड कर सकते हैं? किसी भी चीज में, खाने पीने, कपड़ा खरीदने में, घूमने में, किसी भी चीज में स्पेंड कर सकते हैं. Now in whatever goods or services they are spending that 80 rupees, that 80 rupees is the income of some other group of people, right? Is it clear? Okay, so that 80 rupees is the income of some other group of people. Now in the second round, so in the first round the income was 80. In the second round,
the income was 80 rupees for some other group of people. Now out of that 80 rupees, how much they are going to spend? If the MPC is 0.8, if the MPC is 0, yes, जोर से बोलो. If the MPC is 0.8 and if the income for some other group of people is 80 rupees, then what is going to be their consumption out of that 80 rupees? Come on. कितना? पता नहीं. कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर है तो मोबाइल में कैलकुलेट करो. Income is 80 rupees, MPC is 0.8. What is going to be the consumption? अरे कोई तो बोलो. कैसे गुरप्रीत तुम कैसे निकाला था बोला? तुम बताओ क्या होगा? अगर इनकम 80 है, MPC 0.8 है, तो कंजम्पशन कितना होगा सेकंड राउंड के लिए? 64. Yes, 64. Okay. 64 is the amount which they are spending with the second group of people spending. Now, the expenditure of the second group of people is the income for some third group of people, right? So, तीसरे group of people के लिए 64 rupees is their income. Okay? अगर उनका MPC भी 0.8 है, तो out of that 64 rupees, वो लोग कितना कंज्यूम करेंगे? Again, क्या भैया सही से बोलिए. 64 is the amount which the second group of people are spending. It means that 64 is the income for some third group of people. Now, if the income of the third group of people is 64 rupees and if the MPC is 0.8, then how much amount they are going to consume out of that 64 rupees? 51. कितना? 51. 51.2. Be precise. 51.2. So again, the same process. 51.2 is the amount they are spending. So the amount which they are spending, 51.2. Now this exact value 51.2 is going to be the income for some fourth group of people. Now that fourth group of people will spend some amount of that out of that 51.2 rupees according to their MPC, and that is going to be the income for the sixth group of people. Similarly, we are going to have the income for the seventh group of people, eighth group of people, ninth group of people, and this process will go on, right? This process will go on. So we will have a fourth round, a fifth round, a sixth round, right? Is it clear? Is this thing clear? हाँ भैया. Okay. Everyone, is this thing clear or shall I repeat it once again? Vinith थे आयशा? नहीं और एक बार बोलिए. और एक बार. तो स्टार्टिंग एकदम शुरू से फर्स्ट राउंड से. आयशा? हाँ जी और एक बार बोलिए ना भैया. अच्छा तो देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे कहाँ से किया? 100 रुपए इन्वेस्ट किया, राइट? अब जब 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया है तो वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल का इनकम होगा वो 100 रुपीज. अब उनका एमपीसी है 0.8 रुपीज, यानी कि हर एक रुपए पे वो लोग 0.8 रुपीज स्पेंड कर देते हैं. हर एक रुपए इनकम पे 0.8 रुपीज वो लोग स्पेंड कर देते हैं. अब उनका इनकम है 100 रुपीज, तो टोटल स्पेंड कितना करेंगे? 0.8 into 100, राइट? 0.8 into 100, that is 80 रुपीज वो लोग स्पेंड कर रहे हैं. अब जब उन लोगों ने 80 रुपीज स्पेंड किया, समझो तुमने विनीत से कुछ खरीदा 80 रुपीज का, तो तुम्हारे लिए जो 80 रुपीज स्पेंडिंग है वो विनीत के लिए 80 रुपीज का इनकम हुआ, राइट? तो विनीत का इनकम अब कितना हो चुका है? 80 रुपीज. अब विनीत का एमपीसी भी है 0.8, यानी कि हर एक रुपए में विनीत भी 0.8 रुपीज स्पेंड कर देता है. तो 80 रुपीज पे विनीत कितना स्पेंड करेगा? 0.8 into 80 रुपीज. तो विनीत ने अपने 80 रुपीज इनकम से 64 रुपीज स्पेंड कर दिया, राइट? 64.
अब उसने स्पेंड किसके किसके पीछे किया, उसने समझो थेया से कुछ खरीद लिया. ओके, सो विनीत का जो स्पेंडिंग था 64 रुपीज का, दैट इज द इनकम फॉर थेया. ओके, नाउ थेया हैज एन इनकम ऑफ 64 रुपीज. हर एमटीसी इज आल्सो 0.8. ओके, यानी कि वो भी हर 1 रुपए इनकम पे 0.8 रुपीज स्पेंड कर देती है. तो अगर उसका इनकम 64 रुपीज है तो वो आउट ऑफ दैट 64 उसका 0.8 टाइम स्पेंड कर देगी, यानी कि 51.2 रुपीज. अब ये 51.2 रुपीज समझो उसने स्पेंड किया कुछ खरीदने में गुरप्रीत से. अब यही 51.2 रुपीज जो थेया का स्पेंडिंग था इज द इनकम फॉर गुरप्रीत. तो गुरप्रीत का इनकम इज 51.2. सो अगेन गुरप्रीत क्या करेगा, उस 51.2 रुपीज में से उसका 0.8 टाइम्स जो है वो स्पेंड कर देगा. ओके, तो उसका स्पेंडिंग कितना होगा, कैलकुलेट करो. 0.8 into 51.2 कितना आ रहा है, $40.96. सो 51.2 रुपीज में से 40.96 गुरप्रीत स्पेंड कर देगा. अब गुरप्रीत ने स्पेंड किया अनीशा से कुछ खरीद के. सो गुरप्रीत का जो स्पेंडिंग था 40.96, दैट इज द इनकम फॉर अनीशा. तो सिमिलरली ये प्रोसेस चलते रहेगा, किसी ना किसी का इनकम होते रहेगा. So this process will go on. Now is it clear? Aisha? हाँ भैया. Okay. So यहाँ तक हुआ कि इस तरह से हर राउंड में मल्टीप्लाई हो रहा है चीज. Okay. Now इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था सिर्फ 100 रुपए से. अब देखो नेशनल इनकम कितना डेवलप हो रहा है. अभी सिर्फ 4 राउंड अगर हम लोग देखें, सिर्फ पहला 4 राउंड, तो नेशनल इनकम कितना हो चुका है देखो. 80 plus 64, 144, 144 and 51, 195.2, 195.2 and here 40. So 235.98. So सिर्फ 4 राउंड में, in only 4 rounds, यानी 4 बार अगर पैसा ट्रांसफर हुआ, जैसे एकदम स्टार्टिंग में मैंने मैक्रो का कहा था कि किस तरह से वेलोसिटी चल रहा है पैसों का, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर. कि पैसा कितना ट्रैवल कर रहा है इकोनॉमी में, पैसा कितना है दैट डजंट मैटर. ओके, पैसा कितना ट्रैवल कर रहा है वो मैटर करता है. तो देखो 100 रुपए किसी ने डाला है इकोनॉमी में, और वही 100 रुपए हमें कितना पैसा दे रहा है सिर्फ 4 राउंड में, 235 रुपीस 98 पैसे, मतलब डबल से भी ज्यादा. राइट, अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इसका वैल्यू और बढ़ेगा. ये तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है. राइट, ये इनफाइनाइट जा सकता है. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कितना मल्टीप्लाइड फॉर्म में हम लोग को रिजल्ट देता है. तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा. इस तरह से 80 को आई कैन राइट 100 into 0.8, राइट. 64 को आई कैन राइट 100 into 0.8 into 0.8, right? Why? Because 100 into 0.8 was 64. Okay, sorry, 80. 100 into 0.8 was 80, and 80 into 0.8 is 64. So I can write 0.8 into 0.8, right? ये चीज समझ में आ सकता, कैसे हुआ? हाँ अनीश, भैया. अच्छा, ओके. नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 into 0.8 times 0.8 times 0.8. So here we can add 100 into 0.8 into 0.8, 0.8 into 0.8. So this 0.8, ध्यान से देखा जाए अगर, ये जो 0.8 है ये हर स्टेप में बढ़ जा रहा है. फर्स्ट राउंड में एक बार था, सेकंड राउंड में 2 बार, थर्ड राउंड में 3 बार, फोर्थ राउंड में 4 बार, तो फिफ्थ राउंड में 5 बार, सिक्स्थ राउंड में 6 बार. इस तरह से जो एमपीसी का वैल्यू है, ओके, वो मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जैसे मैंने कहा था इनिशियल कि केंशियन मॉडल में एमपीसी विल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द मल्टीप्लायर. ओके, सो वी कैन, अगर मैं समझो ये इनफाइनाइट राउंड तक गया, अगर ये इनफाइनाइट राउंड तक गया, सो टोटल कितना होगा अगर मैं टोटल ऐड करूं तो. अभी तो मैंने सिर्फ ऐड किया पहला 4, तो 235.8 आ रहा है. तो अगर मैं इनफाइनाइट ऐड करूं तो कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन. सो बेसिकली आई हैव टू ऐड in this way 100
into 0.8, okay, plus 100 into 0.8 square plus 100 into 0.8 cube in this way, right? So I can take 100 common. I can take 100 common. So it will be 0.8 plus 0.8 square plus 0.8 cube in this way, right? Then 0.8 to the power 4 to the power 5 to the power 6, it will go on. Now this is the GP series. Now तुम लोगों में से किसको किसको GP series के बारे में नहीं पता है? You know what is the GP series? हाँ भैया पता तो है लेकिन कहाँ याद है? किसी को है कोई है जिसको नहीं पता GP का मतलब? मेरे को नहीं पता। Okay. So GP series means a series जिसमें पीछे का टर्म और आगे का टर्म का एक कॉमन रेशियो हो। Just a second. Okay. Alright. So GP मतलब हाँ. So GP means geometric progression. इसका मतलब होता है कि अगर आपका एक के बाद दूसरा सीरीज में अगर कॉमन रेशियो है, सपोज 2, 4, 8, 16, 32, दिस इज अ जीपी. 4, 12, 36, 108, दिस इज अ जीपी. मतलब अगर आप एक नंबर को उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करो तो सेम रेशियो आएगा. 4 और 2 डिवाइड करो 2 आएगा. 8 और 4 डिवाइड करो 2 आएगा. 16 और 8 डिवाइड करो 2 आएगा. 32 और 16 डिवाइड करो 2 आएगा. तो दिस इज अ जीपी सीरीज. सिमिलरली यहाँ पे 12 और 4 डिवाइड करो 3 आएगा. 36 और 12 डिवाइड करो फिर भी 3 आएगा. 100 और 8 36 डिवाइड करो फिर भी 3 आएगा. तो इस तरह की सीरीज को हम लोग जीपी सीरीज कहते हैं जिसमें एक कॉमन रेशियो होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? 0.8, then 0.8 into 0.8, then 0.8 into 0.8 into 0.8. तो इसमें अगर हम लोग डिवाइड करें एक के बाद दूसरे को, तो अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा आंसर? 0.8 into 0.8 को अगर 0.8 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 0.8, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा? 2 कट जाएगा तो फिर एक ही बचेगा 0.8. तो ये एक जीपी सीरीज है क्योंकि इसका जो रेशियो है वो कॉमन है. बात समझ में आया? आयशा? हाँ भैया. ओके. सो अच्छा, इनिशियली एक 100 का इन्वेस्टमेंट था वो भी डालना था. सो इन सब में से अगर मैं 100 कॉमन लूं तो 100 प्लस 100 इंटू ऐसा हो रहा है, राइट? यहाँ वाले में से मैंने 100 कॉमन लिया. ओके. तो अंदर का जीपी सीरीज है. तो अगर हम लोग जीपी सीरीज को ऐड करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? अच्छा, नए लिंक में बताता हूँ फॉर्मूला, ठीक है?